Assalamu alaikum, it's me Rabia Zafar. In the recent lecture, I will discuss about the number system and I'll define some definition about the integers, rational and irrational number. Now I will discuss about the terminating and non-terminating decimal, recurring or periodic, or we can say that cyclic decimal. So let's start. The unit name is number system. And first of all, I will continue with the definition that which is terminating decimal. That what is terminating decimal? What is terminating? Terminating decimal. Terminating decimal contain finite number of digits in its decimal part. Terminating decimal में हमारे पास finite number. Finite means कि वो numbers जो countable हों वो हमारे पास जो है वो मौजूद होते हैं. तो then we can write terminating decimal contains finite number of digits in its decimal part. Now simply I'll explain this definition that what is terminating decimal. Terminating decimal contain finite number of digits. यानी कि हमारे पास उसमें जो डिजिट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे जिनको हम काउंट कर सकते हैं. जस्ट लाइक वी कैन से डैट 1 2 3 4. यानी कि हमारे पास वहाँ एक कैपेसिटी होगी नंबर्स की जिसको हम काउंट कर सकते हैं इन इट्स डेसिमल पार्ट में. तो नाउ आई विल यू गिव द एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये आ जाएगी कि अगर डेसिमल पार्ट में हम नंबर जो है वो काउंट कर सकते हैं. जस्ट लाइक वी कैन से डैट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते जस्ट लाइक वी कैन से डैट 1/2. इफ वी डिवाइड 1 with 2 then we get 0.5. हमें यहाँ पर मिलेगा 0.5. and if we take 48/3 and we divide 48 with 3 then we get 5.373. And now I will take another example that if we take 7/10 then we get 0.7. That's when example proves this thing that terminating decimal contain finite number of digits. After decimal point we have finite number of digits 0.5, and after this decimal we have 3 digits. These are also finite, and after point
there is one digit which is 7, then we can say that the terminating decimal fraction is defined just like we can say that in this definition finite number of elements exist. Now we will move towards the non-terminating decimal. Before starting the non-terminating decimal, I will tell you something about the decimal. Terminating decimal. Every terminating decimal represents a rational number. Every terminating हर टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होगा, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर। और रेशनल नंबर। Now I will tell you about the non-terminating. Non-terminating. Non-terminating decimal had infinite number of digits. Non-terminating decimal में हमारे पास infinite number of digits होते हैं. Non-terminating decimal have infinite number of digits हमारे पास इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो कंटेन करते हैं इन इस डेसिमल पार्ट, इसके इन इट्स डेसिमल पार्ट, इसके डेसिमल पार्ट में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट. नाउ आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. Example, just like we can take 3/7, 3/7, then we get 0.428571428 and so on. So then this example satisfy this condition that this is non-terminating. We don't have finite number of element after the decimal point. And another example is there. If we take square root 2, then we get 1.14 1.4142135562 and so on. This is also the example of
non-terminating decimal. And now I'll tell you one note about the non-terminating decimal fraction. Non-terminating decimal are of two types. Non-terminating decimal की two types होती हैं. Non-terminating decimal are of टू टाइप्स. इसमें हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं? टू टाइप्स होती हैं. फर्स्ट हमारे पास यहाँ होगी रिकरिंग और सेकंड हमारे पास होगी नॉन रिकरिंग. फर्स्ट हम लेंगे फर्स्ट में हमारे पास जहाँ पर आ जाएगी रिकरिंग डेसिमल. और सेकंड में हमारे पास हो जाएगी नॉन रिकरिंग डेसिमल. Now I will tell you about the recurring or periodic or cyclic decimal. These three things are same. Recurring और periodic और cyclic. Decimal. Recurring decimal है